Hello guys and welcome to Let's Simplify. Today we'll be studying equality of matrices part 2. In the previous lecture we have studied equality of matrices part 1. Links for the same will be provided in the description below. If you have not yet subscribed to my channel, please do subscribe and hit the bell icon so that you get notified each time I upload a video. So without much of ado, let's get started. So we are going to study exercise 3.1 and we'll continue it. In the previous lecture we did few sums. Today we'll start with this question which says that find the values of x, y and z from the following. So यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है equal to other matrix. ठीक है, दो मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पर. This is the first matrix and this is the other matrix. They are saying that they are equal. Okay, so equal है यानी हम लोग को equality of matrices का यहाँ पर concept use करना है. And they are asking us the value of x, y and z. So ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है. तो एज वी नो फॉर द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल. ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका ऑर्डर तो इक्वल होगा ही. लेकिन उसके साथ साथ एक और कंडीशन था कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए. यानी यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए इस मैट्रिक्स में. तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के A11 पोजीशन पे अगर 4 है तो दूसरे मैट्रिक्स के भी A11 पोजीशन पे 4 होना चाहिए. लेकिन वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर है y. सो इसका मतलब है y का वैल्यू होगा 4. नेक्स्ट, अगर यहाँ पर x है तो इसी पोजीशन में यहाँ पर भी x होना चाहिए. तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? x इक्वल टू 1, आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1. सिमिलरली यू विल इक्वेट दिस 3 विद दिस z, सो यू विल गेट 3 इक्वल्स टू z. And finally you get the value of x, y and z, that is 1, 4 and 3. This was pretty easy. Okay, let's move to the next question. So the next question is the third sub question, which is x plus 5 to 5 plus z, xy equals to 6 to 5 and 8. Okay, so these are the two matrices that they are talking about, and again equality is given, so which means their order should be equal and their corresponding elements should also be equal. So let's get started. यहाँ पर अगर xy है तो यहाँ पर भी xy होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 6 है. तो I can equate x plus y with 6. I can equate this 2 with 2, which is naturally equal. And then 5 plus z equals to 5, and then I have this xy equals to 8. ओके, तो सब कुछ मैंने इक्वेट कर लिया इस केस में, जो कुछ मैं इक्वेट कर सकता था. अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z वेरी इजीली. ओके, यहाँ से देख सकते हो आप z का वैल्यू मुझे मिल जाएगा. ये 5 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस ये 5, सो z का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0. एंड z का वैल्यू आपको 0 इस केस में मिल चुका है. अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. द इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड द इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 8. तो देखिए यहाँ से मैं कुछ एक रिलेशन ला सकता हूँ. आई कैन राइट दिस एज y इज इक्वल टू 8 upon x. Okay, I can write it like this, and then I can substitute this y is equal to 8 upon x in this equation. So I'll get x plus, your y value is 8 upon x, so I'll write it as 8 upon x equal to 6. Then you can just multiply throughout by x. This becomes x square प्लस 8 इक्वल्स टू 6x. आप इस 6x को LHS में लेके आओ, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. ओके, तो चलिए अभी इसको, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मेरा. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से पता है. तो 8 के हम दो फैक्टर्स निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जाते. तो 8 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए सो दैट आई कैन गेट माइनस 6 हियर. So yeah, we'll start with 4 and 2. I can take minus 4 and minus 2. Their product will be 8. Their addition and subtraction will give me minus 6. So I can just write this as x square minus 4x minus 2x plus 8 equal to 0. So that was about splitting the middle terms. Then I can take what common from these two terms. I can get x common, so I'll get x minus 4, and I can take minus 2 common, so I'll again get x minus 4 and equate it with 0. I can take x minus 4 again common. तो यहाँ से जब x minus 4 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा x minus 2 इक्वल्स टू 0. अब हम पहले ब्रैकेट को इक्वल करेंगे 0 के साथ, इक्वेट कर देंगे इसे, तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4, एंड देन यू विल गेट x इक्वल टू, सेकेंड ब्रैकेट से देखिए x minus 2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 यहाँ पर. ठीक है, तो हियर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई योर कंडीशंस. सो according to x equal to 4, so for
x इक्वल टू 4, जब x का वैल्यू 4 रहेगा तब y का वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 8 अपॉन x है, तो y इज इक्वल टू 8 अपॉन x, सो विच गिव्स यू y इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 एंड हेंस y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। ओके, तो जब x का वैल्यू 4 था तब y का वैल्यू मिल गया 2, एंड दूसरी कंडीशन में x का वैल्यू जो है आपका वो 2 है, तो y इज इक्वल टू अगेन 8 अपॉन x एंड y इज इक्वल टू सो 8 अपॉन 2 एंड ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू 4 मिल चुका है। तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरह से रहेगा। आपकी z की वैल्यू है वो तो एक ही आ चुकी है आपको, देखिए z का वैल्यू हमेशा 0 है। ओके, एंड x का वैल्यू जब 4 था, x का वैल्यू जब 4 था तब आपको y का वैल्यू मिला है 2, तो ये आपका वन सेट ऑफ वैल्यूज है। एंड द सेकंड सेट इज z is equal to 0, x equals to 2 and y is equal to 4. So these are the two set of values that satisfy your given condition. This was your second sub question, sorry, this was your third sub question. Let's move ahead. So the next question that we are going to study is the seventh question, which says that find the values of a, b, c and d from the equation, and these are the two matrices which are equal and they're asking us the value of a, b, c and d. ओके, तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी गई है आपको तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, दैट इज a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1, then you can write it as 2a plus c equals to 5, then 2a minus b equals to 0, एंड फाइनली 3c प्लस d इक्वल्स 13। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया अभी इस केस में। अब अगर आपको ए बी सी डी निकालना है तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 3 की बात कर लूँ, तो यहाँ पर मैं a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1 लिख देता हूँ और उसके ठीक नीचे मैं a माइनस बी इक्वल्स 0 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है, सो जब सॉरी दोनों की जो साइन है वो इक्वल है, तो जब साइन सेम रहती है तो अब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस। तो जैसे कि ये कैंसिल हो गया और a माइनस 2a आपको माइनस a मिल जाएगा, माइनस a इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल एंड देन you'll get a equals to 1, so you got the value of a as 1. Once you get the value of a, just substitute it over here, so 2 times 1 plus c equals to 5. When you take this 2 into 1 is 2, when it take this on RHS it gets subtracted, so 5 minus 2 will give you 3. Let's substitute this 3 here, here 3 into this will be 3 plus d equals 13, and this is 9, 13 and 9, this d will be 4 in this case. Okay, and here let's substitute your a value, 2 into 1 minus b equals 0, so this is plus 2, it goes there, it becomes minus 2, minus minus cancel and b equals 2. Okay, so your value of a is 1, value of b is 2, value of c is 3 and value of d is 4, so it is 1 2 3 4. Okay, so that was about this exercise 3.1. I hope you have understood this. That's all about the equality of matrices. These questions are covering all the types, or you can say all the important questions that you can expect in your board exams from this topic. I hope you have understood this. Please do like, share and please subscribe to my channel. See you soon guys in the next video.